This is part 3, the story of Amrita, and we are on page number 34. इससे पहले 2 वीडियो हैं जिसमें आपको हाफ ऑफ द स्टोरी बताई गई है. लेटर ऑन वी आर हियर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ द विलेज यूज्ड टू से? वहाँ खेजरली गांव के बूढ़े जो लोग थे वो क्या कहते थे, वो क्या हमको सुझाव देते थे. द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी टेल्स दैट अगर पेड़ हैं तो हम हैं. द एल्डर पीपल ऑफ द विलेज यूज टू से लाइक दिस: अगर पेड़ हैं तो हम हैं. इट मीन्स वी आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स. नाउ मूव ऑन सेकेंड. डू यू थिंक we could survive if there were no trees and no animals? You have to discuss this. Can we think a situation in which there is no option for plants and animals? Can we survive without them? The answer would be no, a big no. We cannot survive without animals and plants. You can discuss further. Now the next topic is that the village is protected. अब जो सैनिक, जो स्ट्रेंजर्स गांव में आए थे ट्रीज़ को कट करने के लिए, तो गांव वालों ने यूनिटी दिखाई, उन्होंने करेज दिखाया और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और अपने गांव को बचाने का प्रयास किया. द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स for trees affected the king greatly. जो फीलिंग्स थी विलेजर्स की, उससे बड़ा इमोशन में आ गए जो राजा वहाँ के थे. अब उन्होंने क्या कहा? He ordered that from then no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Means the king gave ordered to protect all the animals, all the trees in that particular area. Even today also, almost 300 years later, the people of that area called Bishnois, the people of Khejrali village, the community of Khejrali village is known as Bishnois, and Bishnois are known for their courage, their unity, their temperament, and their good deeds to save trees. Continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, you have seen the desert in which a land of sand, the Khejrali village is quite green. This area is green and all animals roam freely without fear. We can see plenty of animals and much green part of the land of the desert. So here is the Khejrali village where we can see too many Khejrali trees that are shows green portion in the desert. आपको देखकर ये लगता होगा कि ये एक डेजर्ट नहीं है, बट ये एक डेजर्ट ही है, ये रेगिस्तान ही है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेजरली पेड़ उगे हुए हैं और हरियाली से भरपूर है. The next question: do you remember that in class 3rd you have made a tree your friend? Yes, of course you have made. How is your friend now? You have to tell how is your friend, how is the tree, what growth does it achieved till now. Now the second question: why don't you make a new friend this year? Have you seen how your friends, the trees, change in some ways in different month of a year? You have to see the growth of a plant, the growth of a sapling, and you have to measure, you have to take a report of the particular plant that you are growing. Why don't you do this? You can simply plant a sapling in your balcony, in your garden, in front of your house, in front of any other house, or on your roof. A small pot is there. Try, it will feel good to you.
Now these questions can be given and you have to write the answer. Write about any one tree that you have seen. Does the tree flower, क्या उसको फूल आते हैं? Does the flower remain on the tree throughout the year, क्या पूरे साल सेम फ्लावर्स आते हैं? In which month do their leaves fall, कौन से महीने में वो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं? So we are here. Main question is that डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या उस पेड़ पर, जिस पेड़ के बारे में आप लिख रहे हो, उस पेड़ पर फ्रूट्स आते हैं? इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, कौन से महीने में वो फ्रूट देता है, कौन से महीने में वो फल देता है, वो लिखना है। हैव यू ईटन दीज फ्रूट, क्या आपने कभी उसके पेड़ के फ्रूट को खाया है? अगर आपके बालकनी में या आपके आंगन में, घर के दाएं बाएं कहीं पर ऐसा पेड़ लिखा हो, दिख रहा हो आपको, तो उसके बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट इज दैट सम बैक यू हैव read in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck. You have definitely seen in the news, in the TV, that some film actors are misusing their power, misusing their knowledge. They are hunting the innocent wild animals like ब्लैक बक, काला हिरन। काला हिरन एक ऐसा जंतु है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला है, रेयरली ही मिलता है कहीं। सो ऐसे एनिमल्स को किल करने के लिए अगर आप सोच रहे हो या कोई और सोचता है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, दैट कुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी ऑफ द पीपल. वी शुड protect them. They are very essential for us. Discuss. You have to discuss why do people hunt. लोगों को hunting का शौक क्यों होता है? In the old times we have seen that the kings and their ministers used to hunt. But why they are hunting? Why the people are hunting? Why do people are hunting? If we see what is the meaning of hunting, hunting is the practice of seeking, pursuing and capturing or killing wild animals. किसी वाइल्ड एनिमल को, किसी जंतु को, शेर, चीता, भालू, हिरन, इनको देखना, उनका पीछा करना और उनको किल करना या उनको पकड़ना, इस प्रैक्टिस को हंटिंग बोलते हैं, और जो कि इलीगल है इंडिया के अंदर, एंड दैट कैन नॉट बी गुड फॉर एनीवन. We have to avoid such kind of things if they are happening near to us. There are rules against hunting of some animals. Yes, there are definitely some rules. If someone is hunting the animals, people can be punished for hunting. Yes, they can be punished. Why do you think there is this punishment? Yes, because we are living beings and animals are also living beings. Everyone has a right to live. Why we are doing so much pressurize the situation of a animal? We know they cannot speak, so why we are limit their lives? हमको उनको बचाना है, मारना नहीं है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक्ट बना दिया पनिशमेंट देने के लिए. और इस एक्ट में लिखा है, एन एक्ट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अगर किसी आदमी पे हमला होता है, अटैक होता है, देन दे कॉल पुलिस, देन दे कॉल द कोर्ट. सो एनिमल्स को भी प्रिजर्व रखने के लिए, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट रखने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया है, जो कि बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स के सभी मैटर्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे. एंड दे ऑल्सो पनिश द गिल्टी.
Some questions are given here. Talk to your grandparents and find out which birds did they see around them when they were of your age. You can definitely ask your grandparents how they feel when they are surrounded with different kind of birds that are not now. The next, have the number of some of these birds become less? Yes, definitely less. Nowadays modern India or modern country have such kind of feeling that birds are not good customer of us. Are there some birds or animals which they cannot see anymore? Yes, the extinct animals that cannot be seen nowadays. You have to mark with the help of your grandparents. One short question is there. Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and myna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers become less? क्यों कम हो रहे हैं ये बर्ड्स? बिकॉज इनके लिए ट्रीज होने चाहिए ना. द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि हमारे आसपास पक्षियों की कमी हो रही है. द बर्ड्स आर डिक्रीजिंग लेस day by day. The number of birds are decreasing day by day. The first reason for that, the cutting of trees. Second, destruction of habitat. There are plenty of reasons that you can guess.